not every day you come to New York on such a nice weather. अहलन व सहलन मरहबा। इस तरह की चीज़ें प्लान नहीं कर सकते। iPhone 16 Pro Max. Hashtag next level on the streets of New York. Assalamualaikum, namaste, sat sri akal, ahlan wa sahlan to all our friends and viewers around the world. Welcome to your favorite YouTube channel, Into Spices. मैं हूँ अरफान, आपका मेज़बान। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। Friends, मेरा ये पीछे का बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे। We are in Times Square, New York. एक नए सीरीज़ का, एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं the taste, जायका and ज़ौक़ of New York in USA. Let's go. कुछ प्लान नहीं किया हुआ कि कहाँ पे जाना है, जहाँ पे सड़कें जा रही हैं, जहाँ पे एक हुजूम जा रहा है लोगों का, just following the crowds, I guess. So जी viewers, this is the famous Times Square. काफ़ी सारी यहाँ पे जो है like all these LED screens वगैरह हैं. In the night यहाँ पे माहौल ही अलग होता है. एक आदत है कि like whenever we exploring new countries, new places, new cities, I like to kind of come in the daylight before I come out in the night. Just like पता होना चाहिए कि रास्ता कहाँ पे है, safety कहाँ पे है. I'm sure Times Square पे काफ़ी सारे like there's a lot of security, a lot of police over here, so it should be relatively safe. But as the saying goes, better safe than sorry. Looks pretty cool, pretty chill. काफ़ी लोग यहाँ पे जो है घूम फिर रहे हैं. It's a touristic spot. A lot of tourist buses. A lot of people taking selfies and like creating beautiful memories over here. Yeah, I think that's the whole vibe of this place. And then there is these steps यहाँ पे जहाँ पे लोग बैठ के chill करते हैं and like I'm sure the views over there should be good as well. तो चलते हैं थोड़े से हम भी. A small tip, basically when you're walking around, right, you'll see a lot of people in like really nice colorful looking costumes वगैरह में लोग होंगे and like आपको लगेगा कि like उनके साथ एक पिक्चर बना लें, जल्दी से कुछ वीडियो बना लें. Just be careful. अगर पिक्चर्स वगैरह बनानी है, make sure you know the price that you're going to be paying for it, because अक्सर यहाँ पे ये भी सुनने में आया है, a few friends of mine were telling me earlier that be careful of like these people who are dressed up as superheroes and like different costumes and stuff. Especially बच्चों के साथ वो क्या करेंगे, प्रैम के पास आके सेल्फी ले लेंगे और कहेंगे भाई आपके बच्चे के साथ मैंने पिक्चर बनाई है, so pay me $10, $15, $30, whatever. Pro tip, watch out for that. Picture बनानी है, there's nothing wrong with it, but just make sure that you've negotiated the price and you know what you're going to be paying for. Because again, if you don't pay for it, तो ये सारे जमा हो जाते हैं and then खामख़ाई सीन होता है. बेचारा ब्रूस वेन के भी जो है ना बुरे हालात आ गए कि ब्रूस वेन साहब के भी पैसे ख़त्म हो गए. सो ब्रूस वेन भी जो है टाइम्स स्क्वायर पे आके like पॉकेट मनी कमा रहे हैं बेचारे. इतनी महंगी गाड़ियाँ वगैरह जब ब्रूस वेन रखेंगे तो ऑब्वियसली वो भी बेचारे सड़कों पे आ गए इस वक्त. महंगी गाड़ियाँ वगैरह अच्छा शौक़ है, पर थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी करनी चाहिए. थोड़ा सा हम कुछ देशों से सीखें कि हम लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करके चलते हैं. एक गाड़ी जो है 15-20 साल तक चलाते हैं, जब वो पूरी टूट फूट जाती है उसके बाद भी थोड़ा सा उस पर डक्ट टेप वगैरह लगा के चलाते रहते हैं. I guess take a chapter, take a page from our book of our desis in how to invest for your future. वरना तो भाई यही होगा ब्रूस वेन साहब, आपको जो है टाइम्स स्क्वायर पे आके you'll have to chase people for pictures and stuff. कितनी अच्छी like facility दी हुई है यहाँ पे, even though it's like a really busy touristic spot, but still you've got like like nice these kind of chairs and tables and stuff where like you can just sit, have your coffee, थोड़ा सा like get re-energized. A lot of street performers. There's never a dull moment, as they say, at Times Square. मिल रहा है वो देखने को. जो heavy traffic, heavy pedestrian traffic areas जो होते हैं, गड़बड़ चीज़ें भी होती हैं वहाँ पे. So just be careful. Make sure you're not walking around with too much cash or anything in your pockets. भाई साहब की पैंट में कुछ चूंटियाँ चली गई हैं तो बेचारे उछल के चूंटियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं. न्यूयॉर्क बेकरी एंड desserts. Some nice looking desserts over here. Red velvet है, walnut carrot cake, Italian cannoli cream cake slice. थोड़ा सा Fifth Avenue को भी चक्कर लगाते हैं. कुछ खास शॉपिंग तो नहीं करनी, but we can just check out कि Fifth Avenue पे क्या सीन है. शायद आप लोगों को कुछ like दुकान वगैरह दिख जाए जो आप लोगों को पसंद है. Let's go and explore Fifth Avenue as well. एक समंदर है लोगों का भाई यहाँ पे. Even though this is not like peak tourist season, but it's busy over here. Come in for the perfect gifts. M&M World. ये एक्सप्लोर करते हैं यार, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ये M&M World. So that's the M&M World. अंदर चलते हैं, M&M World को एक्सप्लोर करते हैं. क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है M&M World के अंदर एंटर होते ही. रियली नाइस वेलकम
kind of chocolatey smell. It's better than the smell outside, to be honest. I prefer this chocolate smell to the aroma on the streets outside. I mean, start obviously ये chocolate से हुआ था, but now they've branched out into all sorts of goodies, all sorts of branding, all sorts of merch, and these are their M&Ms. You can mix and match. यहाँ पे सफाई चल रही है. हर shape, हर size के containers, M&M dispensers. कुछ साल पहले we visited M&M World in London as well, so that was pretty big. This one relatively smaller. Some being Krispy Kreme donuts. Hot Krispy Kreme, original glazed. Again, lots of tall buildings over here. First time, like I was saying earlier, first time in New York. Weather, बहुत ही मजे का है. So, you know, it's nice to be walking around over here. Otherwise, I think this is the perfect weather to come in New York. Otherwise, यहाँ पे ice होती है, and you know, like it's really rainy and everything. But I think we found the perfect weather to be walking around on the streets and exploring the streets of New York, because again, New York के बारे में कहा जाता है, it's one of the walking cities. Everything is very nicely laid out. It's like a grid structure over here. So, आगे चलते हैं, explore करते हैं. पूरा शहर ऊंची buildings, ऊंची इमारतों से भरा हुआ है, but somehow they find a way to construct more tall buildings. Again, वही होता है कि जो छोटी buildings हैं, they get taken over, and then on top of that block, they built up more skyscrapers, more tall buildings. पूरा concrete jungle, a lot of construction, a lot of maintenance going on a lot of buildings over here. Traffic यहाँ पे बहुत ही बुरा है. एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आधा घंटा almost लग जाता है. So it's always better to explore any city, to get and feel the vibe of the city on foot. तभी आपको पता चलता है कि भाई क्या माहौल है यहाँ पे and क्या हो रहा है. So that's like the street food culture over here. The street food carts. Most of them, इनके ऊपर जो है halal का sign भी लगा हुआ है. So a lot of halal food options over here, a lot of food carts. Again, part of the street food culture in New York. And again, a lot of tourists come over here from Middle East, from other countries. So I guess the halal food is thriving over here. One of them is the Halal Guys or something. So we're going to go explore that as well. शाम में चलेंगे उसकी तरफ. काफ़ी उसके बारे में सुना है, Halal Guys के बारे में. So इंशाल्लाह उसको भी चेक करेंगे शाम में. अक्सर न्यूयॉर्क की फुटेज आपने देखी होगी. काफ़ी ग्लैमरस दिखाया जाता है, काफ़ी रौनक दिखाई जाती है. बट कैमरे में एक चीज़, अगेन आई कीप सेइंग दिस इन माय अदर व्लॉग्स एज वेल, एक प्रॉब्लम है कैमरे का कि यू कांट स्मेल स्टफ, राइट? यहाँ पे when you're walking down the street, there's a really strong stench of something, and that is kind of like part and parcel of the city life over here. People have gotten nose blind to it, but when you come in over here, you can immediately feel like there is something wrong, and there's this strong smell over here. So वहाँ पे भी कुछ सामने food carts वगैरह नज़र आ रहे हैं. One thing I've noticed कि as compared to Toronto, थोड़ी सी यहाँ पे downtown के अंदर especially, the driving seems a bit rough. Traffic light भी अगर like if it's white, like pedestrian के लिए it's white and you can cross, still cars are turning and stuff. So yeah, if you've got kids, cross when everybody's kind of stopped, because there are bicycle people and people on EVs and stuff, like skateboards and stuff, they just pass by you. So yeah, if you've got kids, just watch out. We've got nice decoration on the scaffolding as well. So right now we are at the intersection of West 47th Street and 5th Avenue. Urban hawker. They've got sushi, curry rice, sling cocktails, skewers, hand roll, pepper crab, kopi, rainbow cake, street food. So Southeast Asian Food Hall. That's what it is basically. Southeast Asian Food Hall. काफी सारे options हैं. Different Singaporean options. And again, most of the food, obviously, it's not halal, so kind of avoiding it. Thai hai, Singapore, authentic Malay cuisine. Yep, it is halal. We got some halal food over here at Paddy D, New York City. Jakarta Munch. यहाँ पे भी halal का sign लगा हुआ है. But again, do your own research. I'm not sure if this is like hand slaughtered Zabia halal or no. So we got Indian food over here. We got naan wraps, chicken tikka masala and all that stuff over here. Vada pav hai, samosa chaat, Meenakshi bhel puri. Never had that.
एंड यहाँ पे भी हलाल का स्टैम्प लगा हुआ है. So right now I'm at Kopifellas, Singapore's traditional coffee, baba, tea and toast. In our trip to Singapore a few years back, I fell in love with the kaya toast and the kopi जो उनकी होती है, जो it's basically a hot coffee but it's Singaporean style hot coffee. And I just saw that on the board over here, and you know me, creature of habit, can't resist a kaya butter toast and a hot cup of kopi. So let's try that out over here at Kopifellas, Singapore's traditional coffee, boba tea and toast. और सिंगापुर में I used to have it with पराठा. इनका जो सिंगापुरियन स्टाइल पराठा होता है उसके ऊपर काया लगा के अलग ही मज़ा आता था. और ये आ गई जी काया हमारी on the toast. इसके ऊपर आ गया a big thick slice of butter. The toast, kaya toast with butter, ready. And that's our kopi, almost ready. Thank you so much, sir. So the total for one kopi and the kaya toast came down to $13.14. It's a bit expensive. वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तो एक नज़र पड़ी यहाँ पे एक साउथ एशियन फूड हॉल टाइप का एक बोर्ड लगा हुआ था बाहर. मैंने चलो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे अंदर. तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं विच आर यू नो लाइक स्पेशलाइजिंग इन सिंगापोरियन स्टाइल फूड. कुछ और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे. सो नज़र पड़ी एक सिंगापोरियन रेस्टोरेंट के ऊपर विच इज़ कॉल्ड Kopifellas. Apparently it's a chain in Singapore क्योंकि यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि Singapore's traditional coffee, boba tea and toast now in New York City. So if you're planning to visit New York City for our Singaporean visitors, don't worry, आपको आपका Kopifellas यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा. एंड यहाँ से मैंने उठाया है द काया टोस्ट. अगेन काया इज़ लाइक उनकी ट्रेडिशनल जैम होती है which is made with pandan leaves, which gives it this green color to it. There's a coconut in it, there is a little bit of eggs in it. और उसके साथ एक बड़ा मज़े का पेस्ट बनता है. And then what they do is they put it on a toast. ऊपर से फिर लगाते हैं एक बड़ी thick सी slice बटर की in between two toasted slices of bread. Let's try. First bite. Bismillah. मज़े की है, काफ़ी टेस्टी है. अगेन इट्स जो इनकी जो जैम है आई आस्क्ड देम वो सिंगापुर से ही मंगवा रहे हैं. उसकी वजह से वो एक ट्रेडिशनल जो टेस्ट होता है काया का वो टेस्ट आ रहा है. काया ऑन इट्स ओन काफ़ी स्वीट होती है, सो यू नीड समथिंग दैट न्यूट्रलाइजेस दैट स्वीटनेस ऑफ इट. सो उसकी वजह से बटर डज द परफेक्ट जॉब, परफेक्ट कंपेनियन ऑफ अ गुड काया टोस्ट और काया जैम. जिस तरह हमारे लच्छा पराठा होता है इसी तरह से सिंगापुर में भी पराठा मिलता है. उसके ऊपर काया जैम लगा के खाने का मज़ा ही अलग होता था. स्ट्रीट फूड न्यूयॉर्क टूर का पहला मील वाज अ सिंगापोरियन स्टाइल काया टोस्ट. इस तरह की चीज़ें प्लान नहीं कर सकते, खुद ब खुद हो जाती हैं. सो कोपी ख़त्म करते हैं विच इज़ देयर अगेन सिंगापोर स्टाइल ट्रेडिशनल कॉफ़ी इनकी. एंड आउटसाइड इट्स गॉन अ लिटिल बिट डार्क. पता नहीं क्या हुआ, व्हाइल आई वाज हैविंग यू नो लाइक कॉफ़ी पी रहा था, मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था, तब तक बाहर जो है काफ़ी अंधेरा हो चुका है. बट इट्स नॉट सनसेट टाइम. सो डिज़र्ट हो गई इन द शेप ऑफ काया टोस्ट. अब चलते हैं. देयर इज़ दिस फेमस स्ट्रीट कार्ट ओवर हियर कॉल्ड Adel's हलाल प्लेस समथिंग. काफ़ी कुछ सुना उसके बारे में कि भाई काफ़ी वायरल हुए हैं भाई साहब, काफ़ी मज़े के उनके शोरमाज होते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं. सो चेक करते हैं कि भाई क्या क्यों फेमस है, इतना क्या हाइप है. और मेरे सामने इस वक्त आ रहा है रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल. क्वाइट फेमस बिल्डिंग कह लें, काफ़ी सारे शोज़ वगैरह होते हैं यहाँ पे. सो रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल एट 6th Avenue इन न्यूयॉर्क. ऑब्वियसली इतने पुराने टाइम से है तो हर चीज़ के पीछे जो है ना काफ़ी हिस्ट्री है. That's good to see over here. You got like halal food, Bismillahir Rahmanir Rahim, Mashallah लिखा हुआ है. So that's good. So you got the Radio City Music Hall. Bobby Parker है. Oh, the Tonight Show starring Jimmy Fallon. यहाँ पे सामने जो है, मेरे सामने यहाँ पे जो है, it's like NBC Studios. अगर आपने Tonight Show देखा है और if you watch Tonight Show starring Jimmy Fallon, वो यहाँ पे शूट होता है. So सामने लिखा हुआ भी है. This is basically the home of America's favorite Saturday Night Live, Saturday Night Live, the Tonight Show starring Jimmy Fallon. Late Night with Seth Meyers, the Kelly Clarkson Show. ये सारे shows यहाँ पे shoot होते हैं. So that's the Fox News headquarters over here. Lots of live shows etc. यहाँ पे होते रहते हैं. Quite famous है for its shows over here.
Fox television station. So, जिस तरह से कहते हैं ना कि खाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसी तरह से ऊपर वाले ने भी जो है हर किसी का अपनी जो है रिस्क लिखा हुआ है। खाना तो प्लान तो था कि भाई आदल्स जो हलाल फूड है उसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो क्लोज़ था अभी, काफ़ी शाम में खुलता है, 6 बजे के बाद कुछ खुलता है, तो मुझे नज़र भी नहीं आया उनका फूड ट्रक कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है। सो वाज वॉकिंग एंड देन अगेन केम अक्रॉस द हलाल गाइज, which is again one of the OGs that introduced halal food and made halal food kind of popular on the streets of New York. Apparently they've been around since 1990. काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी भी लाइन्स होती है। They started off with one food, अब माशाल्लाह जो है इनके 3-4 ट्रक्स हैं, different locations पे इनके ट्रक्स हैं। So again very tasty apparently. Try करते हैं उनका भी खाना। Hi my friend. Yes, So that's where all the magic happens. Is this chicken shawarma? chicken, yeah. Very nicely done chicken shawarma. Pieces of Delicious. very delicious, yeah. Yes. Lazeez. Yes. Yes. Lazeez. Katir Hillu. Delicious, huh? So they make some really nice, delicious chicken shawarmas over here. They've got different sauces. Halal guys. White sauce, hot sauce, barbecue sauce, green sauce. Everything, kullu shay. So picking up a nice chicken sandwich over here at the Halal Guys. There go the veggies. There comes the grilled chicken. More veggies. White sauce. And there goes the white sauce. Signature Halal Guys white sauce. Spicy sauce. Here comes the spicy sauce. Green sauce. What is- Mayonnaise with avocado. Okay, yalla. Let's do that. Mayonnaise with avocado And this barbecue sauce. and barbecue sauce. A fully loaded, saucy grilled chicken sandwich at the Halal Guys. I'm sure it's going to taste amazing. Yeah, it's really good. I give you extra white sauce and one hot sauce. Amazing. Thank you, brother. Enjoy, sir. So we've picked up a shawarma sandwich, a grilled chicken sandwich at 53rd Street and 6th Avenue के intersection पे from Halal Guys. They have 2 stalls over here. Actually, they have got 1 stall over here on my right, again on 53rd Street, and then one on the left as well. So on both sides of the street, they've got the Halal Guys grilled chicken sandwiches and platter shops. Okay जी, Halal Guys से हमने अपना grilled chicken sandwich. It's not a shawarma joint. I thought it would be a shawarma place, but shawarma place नहीं था. They basically are doing grilled chicken. जो जिस तरह से हमारा जो कराची में होता है ना कटाकट कर रहे होते हैं, तो उसी तरीके से कटाकट स्टाइल में जो है वो अपना जो है ग्रिडल पे पूरी चिकन को ग्रिल कर रहे थे। एंड देन आई टुक दी सैंडविच बेसिकली ग्रिल चिकन सैंडविच, क्योंकि इनका जो बोल था वो काफ़ी हैवी ड्यूटी लग रहा था। उसमें राइस थी, वेजिटेबल्स थे, ऊपर उसके जो है फिर अपना जो चिकन काफ़ी भरपूर डाल रहे थे। एंड देन देयर वाज अगेन अनदर लेयर ऑफ वेजिटेबल्स। उसके बाद उनकी जो सिग्नेचर सॉसेस हैं, द वाइट सॉस, द स्पाइसी सॉस, देन देयर इज़ वन मोर एवोकाडो मेयोनीज सॉस एज वेल। सो ट्राई करते हैं दी हलाल गाइस का। सिंस 1990 से कुछ तो बात होगी कि अभी तक जो है यहाँ पे टिके हुए हैं फॉर द पास्ट कितने साल हो गए, 35 years almost. So again, let's try the Halal Guys का grilled sandwich. काफ़ी heavy duty है. Wow, completely falling apart, fully loaded है. And again, when I was making the videos and stuff, one of the managers कह रहे हैं, the shift in charge कह रहे हैं, he kind of got intrigued and he gave me a complimentary hummus and baklava as well. He's like, "You're our brother, try this out as well." So thank you very much to the team of the Halal Guys, and let's try first bite Halal Guys का grilled chicken, New York की सड़कों पे true street food style. First bite, Bismillah. पूरा गेम जो है सॉसेस का, सॉस जो वाइट वाली सॉस है काफ़ी मज़े की है। आई थिंक दैट्स वाई इट्स लाइक लाइक वन ऑफ देयर सिग्नेचर सॉसेस। उसकी अलग से जो है ये लोग पैकिंग करके भी देते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा डालनी है, सो यू गॉट द एक्स्ट्रा वाइट सॉस एज वेल। आई हैवंट कम अक्रॉस एनी shawarma place or like street food place that has got their own signature sauces. So इनकी अपनी जो है signature sauces हैं, the hot sauce and the white sauce from the Halal Guys. Sauces का like I was saying game है। Chicken no doubt very fresh, juicy है, grilled हमारे सामने जो है fresh कर रहे थे, और हर घंटे जो है बेसिकली अपना एक नया बैच ये लोग ग्रिल करते हैं, जिसकी वजह से the chicken retains its like जो juices है, it doesn't get dried out, because chicken अगर ज़्यादा देर तक ग्रिडल पे पड़ी रहे, गर्म हो करते रहे, तो it loses its like juiciness, right?
This one quite juicy, बड़ी मजे की है. Quite a heavy duty sandwich. Bread is so. Bread मजे की नहीं है इतनी. It's a bit on the drier side, the bread, but the meat, the sauces, really nice. It's kind of the thick pita bread basically. So it's good for like as part of the bowl or something, because then like it gets soaked with the sauces and stuff. But in a wrap, in a roll, I don't think it kind of matches the whole combo जो है इसका. So again, the meat, no complaints, very nicely grilled, fresh, juicy, बड़ा मजे का. So sandwich काफ़ी heavy duty है, काफ़ी बड़ा है. So I'll probably finish it off later. अभी चलते हैं इनकी hummus की तरफ. बड़े प्यार से उन्होंने दिया है. So let's try the hummus from Halal Guys. के ऊपर भी कुछ रेड किस्म की सॉस डाली हुई. I don't know what that is, but from Halal Guys. Lovely. अगर पीटा ब्रेड होती ना, उसके साथ ये hummus को डिप करने का मज़ा ही अलग आता है. Very creamy, smooth, buttery texture of the hummus. Very nice. 10 out of 10 on the hummus. And the sandwich, the meat of it, and the combination with the sauces, hashtag next level. Good stuff. और बकलावा भी है. अब तुर्की में जो है बकलावा, और in our Istanbul food के vlogs में अगर आपने देखा हो, during our Istanbul food and travel vlogs, we had a lot of baklava over there. So I'm kind of spoiled with the baklavas in Istanbul. So this one, it's not fresh. Just Istanbul में हमने जो है बकलावे खाए थे. This one is a bit refrigerated because it's a bit cold. पकड़ते ही पता चल रहा है, but let's try. प्यार से दिया अब उन्होंने complimentary baklava, no complaints from the Halal Guys. First bite. Baklava ठीक है. I mean, the Halal Guys is famous for its sandwiches, for their grilled meat, the chicken, the beef sandwiches, etc. The bowls जो इनके, they're not famous for the baklava. So baklava अच्छा ठीक है. But again, my advice, if you're in town, अगर आप New York में हैं, if you want to try out the street food in New York, Halal Guys is a good option. Go for their bowl, you'll love it. Friends, with us is the manager of this amazing food stall over here, the Halal Guys, Ahmed Yahya. Welcome to our YouTube channel, Into Spices. Welcome to you, and it was amazing to meeting you. So, as they say, Ahlan wa sahlan, marhaba. Ahlan wa sahlan, marhaba. So tell us something about the Halal Guys. You've been here since 1990. Yeah, we started here in 1990, and in 1990 it wasn't like that. It was just a small cart to sell hot dog, and then we got the idea to serve something for the cab driver and the other public people, and we did. We first car serve rice and chicken, and then it started little by little to be all over around the New York City. Amazing. And is this the first location, that the original location is this? Yeah, this is the original one, which in front of you right now. And then we get the second location, which is in the east side, 56th Street. Okay. And we got the third one, which at 7th Avenue and 53rd Street. Amazing. Any more plans to expand further? Yeah. There are plans. Yeah. You make it everything fresh, right? Because one of your cooks was telling me, the person who was making the chef, that you make everything fresh. After every 1 hour, the chicken is grilled fresh. Yeah, what we're doing is we have a special cart at the other side, at the east side. We don't do anything on it except we cook chicken. Oh, I saw that. Once we finish the cooked chicken, we send it over here. Amazing. And it takes like 10-15 minutes to sold out. And then we think about the new one. Keep doing the amazing work, brother. And inshallah, we'll have the Halal Guys all over New York very soon. I appreciate that. Thank you very much for your feeling. And I see you next time. Welcome at any time. So जो फूड कार्ट्स वगैरह हैं, ज़्यादातर मैंने देखा कि यहाँ पे while passing हलो हाय हो रही है काफ़ी लोगों से, काफ़ी फ्रेंडली हैं फूड कार्ट वाले, and most of them basically they are from Middle East. जिस तरह अभी Halal Guys के लोग थे, so most of the staff is from Egypt,
So that's really good, you know. And first से अरबी टूटी फूटी आती है, so उनके साथ जब अरबी में थोड़ी सी गपशप करते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं. जैसे जैसे शाम हो रही है, you know, like the city is coming to life. Offices भी off हो गए. I was about to say schools भी off हो गए, but offices भी off हो गए. So there's a lot of, you know, like people coming down from offices and stuff. So the food carts and everything, it's really coming alive right now. There's a lot of rush everywhere. So ये है भाई न्यूयॉर्क की सड़कें. तो इसके लिए लोग तरसते हैं कि भाई जाना है, न्यूयॉर्क जाना है. तो देख लें भाई, ये है न्यूयॉर्क. ओके जी, इस वक्त हम जा रहे हैं. वी आर ऑलमोस्ट देयर एट सेंट्रल पार्क. अगेन वन ऑफ द आइकॉनिक टूरिस्टी थिंग्स आई वुड से टू डू इन न्यूयॉर्क. एवरीबडी कम्स ओवर हियर, सेंट्रल पार्क विजिट करते हैं. सो चेक करते हैं सेंट्रल पार्क को भी. यहाँ पे जो है सेंट्रल पार्क के जस्ट आउटसाइड गॉट ऑल दीज नाइस looking carriages that you can, I'm sure, rent out and then just go and do a tour around. So nice little horses over here. They look beautiful. Hey horsey. And the dog and the horse are, like, you know, getting friendly. They're getting introduced to each other. Bigger than you. Well, there's lots of people over here, so I guess it's okay to be roaming around in the park at this hour. It's kind of getting a bit dark right now. And बचपन में I'm sure कहानियाँ तो सुनी होंगी आप लोगों ने भी कि बेटा रात के वक्त दरख्त के नीचे से नहीं गुजरना, वरना तो you know वो क्या होता है, चुड़ैल वगैरह जो है वो चिमट जाएगी. So शाम होने से पहले निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से. I don't believe in those folk tales, but hey, why take the chance? It's a pretty big park over here. And once you enter the park, the whole, you know, like the noise of the city, it's kind of left behind. आपको जो है सिटी की जो एक ट्रैफिक का जो शोर शराबा वगैरह है वो यहाँ पे फील नहीं होगा. The whole place is like surrounded by these trees and this greenery and stuff. So you don't really feel like, you know, like behind, you know, all these trees is going to be like a concrete jungle. You don't get that feeling of it. Pretty serene, pretty beautiful all around. I would say for a park of this size, I mean, I'm impressed कि काफ़ी अच्छी तरह से maintain किया हुआ है. And again, there was no, आप लोगों ने देखा, there was no entrance fee to enter this parks, walk around, explore. बड़ा ही खूबसूरत से व्यूज़ हैं यहाँ पे सेंट्रल पार्क में. पीछे मेरे देख सकते हैं काय वाला पानी है पूरा. And again, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, caution, do not swim in it. Harmful algae blooms have been found in this water, so do not fish or try to swim in there. Might not be good for your health. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the lake within Central Park. It looks really beautiful. Sunset हो रहा है, and there's really nice, beautiful reflections of the buildings over here in the water. Look, boating कर रहे हैं. Very peaceful atmosphere over here, and you know, just chilling. Uncle, auntie सारे लगे हुए हैं, boating कर रहे हैं. Just enjoying their life, I guess. आगे एक ब्रिज भी है. I'm sure वहाँ से भी views अच्छे आएंगे. So ब्रिज के ऊपर चलते हैं, वहाँ से views भी check करते हैं. So ये जो है ब्रिज है यहाँ पर सेंट्रल पार्क के अंदर ही, on the lake side. Again, really nice views over here. ज़िंदगी कश्ती एक साथ चला रहे हैं दोनों. So that's really cool. So जी ये है इनका Bethesda fountain. काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा fountain है. काफ़ी अच्छी तरीके से well planned पूरा जो है ये पार्क बना हुआ है. सेंट्रल पार्क काफ़ी बड़ा है. I'm not really sure what the size of the park is, but I've been over here for the past like half an hour, 45 minutes, more than 45 minutes actually, and चले जा रहा है. I think so पूरा दिन भी अगर आप यहाँ पे घूमें, so you can easily, you know, like pass time. आराम से जो है अपना वो क्या नाम है, आराम से अपनी पिकनिक बास्केट वगैरह बना के आए यहाँ पे, and you can just chill over here. यहाँ पे जो है there are geese over here. ये कनाडा से हमारा पीछा करते हुए यहाँ पे आई हैं I guess. So you can do a lot of things over here, you know, like अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं, वेडिंग की पिक्चर्स ले सकते हैं अगर आपको वेडिंग की पिक्चर्स वगैरह लेनी है, जिस तरह यहाँ पे ले रहे हैं लोग, वीडियो वेडिंग फ़ोटोशूट्स एक्सेट्रा. फैमिली के साथ आएँ, एंजॉय करें. सो द हॉर्स राइड यहाँ पे जो है इट्स फॉर $63.70 for 30 minutes. Good job, buddy.
Good job, man. Good horse. Good horse. You want to say hi to Into Spices? Not a friendly horse. Hi नहीं बोल रहा. Anyways, नहीं ले रहे right इस पे. Skating चल रही है, cycling चल रही है, jogging चल रही है. बच्चे healthy activities में लगे हुए हैं यहाँ पे. Really nice to see, you know, like people out and about after the whole pandemic and everything. But you know, like it feels like the life is back. Allah इस तरह की जो है वबाई जो अमराज होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, उससे सबको you know सबकी हिफाजत करे ताकि you know like people can enjoy life a little bit and be out and about because that's what life is about, you know. Enjoy करें यार, chill करें. I guess nature kind of has a way of telling us, educating us. भाई chill करो आपस में. नफ़रतों के लिए life बहुत कम है दोस्त. Chill, enjoy life. दूसरे क्या कर रहे हैं, किसके पास कितना पैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, टेंशन ही है यार. So stay away from tensions, enjoy life, enjoy the nature and explore the world because the world is really beautiful. And mashallah, you know, like it's really great कि हमें ये करने का मौका मिलता है to share our stories with you, to make, you know, like food and travel vlogs from all around the world because again it's a passion project. We really love doing this kind of, you know, exploring and vlogging about our experiences. And again, thank you very much. आप लोग सब हमें follow कर रहे हैं, tune in करते हैं. To all our old subscribers जो शुरू से हमारे साथ हैं from the very first vlog, to all the new people who are joining us. Again, I can't, you know, thank you guys enough for all the support, for all the love that you show. Completely unplanned है, proper तैयारी के साथ तेरी क्लब का भाई. So, और यहाँ के रास्ते भी अभी तक याद दिए हुए हैं. और मेरी जो नेविगेटर है, जो मेरी डायरेक्टर है, जो मेरी वाइफ है, my partner in crime, वो हमारे साथ नहीं है. तो उसको अभी तक जो है सारे रास्ते याद हो चुके होते हैं. वो कहती कि भाई, वो कहती कि इरफान यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से वो आएगा. I don't know how she does it, but she's got like a built-in GPS in her head. So Central Park से निकल के we have started walking on 5th Avenue. Right now, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, is the famous square building of Apple on 5th Avenue. The square block. iPhone 16 अभी launch हुआ है. So अंदर चलते हैं और चेक करते हैं Apple के स्टोर को. So that's the Apple store. काफ़ी बड़ा है अंदर से. So that's the newly launched iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro Max. It's really amazing that every year they come up with a new iPhone. I guess it's one of the best phones out there. We have the immersive Apple virtual reality glasses over here as well. The VR headset. Apple Vision Pro. Right over here. If you want to experience it, you can come over here and experience. Get a live demo. Right now we are at the famous 5th Avenue. So a lot of brands over here, Tiffany है, Gucci है, Prada है, और इन सब के बीच में Into Spices है, क्योंकि हम भी किसी ब्रांड से कम नहीं है दोस्त. अब जहाँ पे Apple होगा, वहाँ पे Microsoft भी तो होगा ही होगा. So that's the Microsoft store. Pretty much the same design, same aesthetic जो Apple का है. So that's the vibe of Times Square in the night. रात को तकरीबन इस वक्त जो है, it's almost 11:30 in the night, but it seems like अभी अभी शाम हुई है. जिस तरह से यहाँ पे crowd दिख रहा है, काफ़ी happening जगह है. Quite a lot going on over here. काफ़ी hustle bustle है. काफ़ी, you know, like it's like really come alive in the night. This whole place. There's different street performers, different costumes के अंदर अपने करतब दिखा रहे हैं. वो भाई साहब सांप लेके खड़े हुए हैं वहाँ पे. अगर आपको सांप के साथ पिक्चर्स लेनी है, आई थिंक थोड़ा सा कुछ खाने के लिए पकड़ते हैं हल्का फुल्का. फिर कल जो है एक प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं. उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद. ओह, और बाय द वे डिनर तो दिखाना भूल ही गया जल्दी में. तो डिनर दिखाता हूँ पहले. هيطلع لك واحد وايت وقطيس.
Yes, boss. Hello, Salan Habibi. Do you have the chicken with salad? I have, yeah. Can I get one You chicken like with some salad? pita bread on it? Yes, please. That'll be One chicken salad, pita bread. good. You guys are very busy, huh? You guys are very busy. So after waiting for about 45 minutes, finally picked up my chicken with salad. Come back, the food is great, bro. And I've got a message from one of our potential subscribers, I would say. Halal food, yes, sir. So what would you like to say? I'd just like to say this is one of the best carts out here. Yeah. I wouldn't wait more than 30 minutes for the line, but sometimes like, the line will be like an hour plus. If you love the food, if you're a foodie, you're gonna enjoy it, man. I appreciate it. Enjoy. That's right. I got you, bro. Take care. So that's the famous Adel's famous shawarma place on West 49th Street and 6th Avenue Halal Food, right opposite Radio City Music Hall. Quite busy. Like it's 1 in the night right now, 1 a.m. And these guys are like churning it out, one order after the other. Full speed ahead, full throttle. Alright जी, वैसे तो व्लॉग का इख्तिताम हो चुका था. टाइम स्क्वायर पे आई हैड साइंड ऑफ. तो मैंने सोचा कि यार आदिल्स फेमस हलाल फूड को चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि वो भाई साहब जो हैं इतने फेमस हो चुके हैं कि वो 6 बजे से पहले अपनी जो है ना फूड कार्ट खोलते नहीं हैं. बट रात के तकरीबन 12:30 AM इतनी लंबी लाइन आदिल्स के बाहर जो फूड कार्ट है, लाइक पूरी रो थी, मतलब लोगों की एक भीड़ लगी हुई थी. ऑलमोस्ट आई वुड से 30-40 पीपल वर स्टैंडिंग इन लाइन राइट टू गेट देयर हैंड्स ऑन दिस ग्रिल्ड चिकन और जो कॉम्बो है उनका राइस के साथ एंड ऑल. तो मैंने जो कॉम्बो लिया है इस वक्त, इट्स बेसिकली विद पीटा ब्रेड, चिकन है इसके अंदर, सैलड है एंड उनकी जो सिग्नेचर सॉसेस है, द वाइट सॉस, ग्रीन सॉस कोई है, आई थिंक सो इट्स द सेम जो हलाल गाइस पे पहले हमने खाई थी. आई थिंक दे पुट एवोकाडो एंड मेयोनीज एंड देन उनकी अपनी जो है सीक्रेट जो स्पाइसी वाली सॉस है. तो गेम पूरा स्पाइसेस का बनता है एंड ग्रिल चिकन है. सो लेट्स ट्राई. फर्स्ट बाइट आदिल्स की ग्रिल चिकन. बिस्मिल्लाह. And it's a good thing that I'm having it on the same day that I had the Halal Guys, so I can actually do a proper comparison. क्योंकि Halal Guys का जो taste था वो अभी भी जो है ना, like it's fresh in the mind as well as on my taste buds, right? So इनकी जो chicken है वो थोड़ी सी, I would say it's a bit on the drier side. Spicy है, ज़्यादा मसाला है इसके अंदर, so it has got that like really nice kick to it. बट अगर मैं सिर्फ चिकन की बात करूँ, राइट, आई थिंक सो दी हलाल गाइस का जो चिकन था दैट वाज मोर जूसी. वाज इट मोर स्पाइसी? नो. दिस वन इज़ मोर स्पाइसी. दिस वन हैज़ गॉट मोर पंच इन इट. सो बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स इफ यू लाइक स्पाइसी फूड. आई एम श्योर कुछ ना कुछ उन्होंने अपना जो है मैरिनेशन की होगी जिसकी वजह से यू गेटिंग दिस रियली नाइस रेड, orangish red color on the chicken. I mean, while roaming around, I saw a lot of halal food carts who are doing the same thing, exact same thing, right? उनके पास भी वही grilled chicken है, वही rice का bowl है, vegetables, pita bread, all that, standard stuff. But there's hardly any customer on their stalls. और ये आदिल की जो है माशाल्लाह किस्मत अच्छी है कि लाइनें लगी हुई हैं which go sometimes across the whole block, right? So final verdict, if you were to ask me, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगेन हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने हलाल गाइस पे आदिल्स पे खाया हुआ है, विच वन डू यू प्रेफर. फॉर मी इफ़ आई वर टू लाइक हैव अ सेकेंड राउंड, लाइक कल अगर क्रेविंग होती है कि भाई फिर से जो है ग्रिल चिकन खाई जाए, देन आई वुड प्रॉब्ली गो टू दी हलाल गाइस. नहीं इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे फ्री में बकलावा दिया था, बट अगेन लाइक इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल टेस्ट. आई काइंड ऑफ फील लाइक उनकी चिकन, उनकी जो स्पाइसी सॉस थी वॉज रियली नाइस. मज़ा आया था वो खा के. मिर्ची सही की मिर्ची लगी थी. ये भी अच्छा है, इट्स नॉट बैड, बट अगेन दी हलाल गाइस वॉज #next level. दिस वन गुड स्टफ. सो अब मैं ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी. फिर थोड़ा सा कल का प्लान बनाते हैं प्रॉपर आइटनरी के साथ कि भाई क्या क्या करना है एक्टिविटीज़ की. आज का दिन पूरा हैपहैज़र्ड था. एनीवेज उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यू नेवर नो इनटू स्पाइसेस किस कंट्री में, किस शहर में नेक्स्ट टाइम पहुंच जाए. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर. अल्लाह निगहबान.